Hello everyone, very good evening to all of you. Welcome to Vedang Teachers Point, powered by Vedang Institute of Technology. So, before moving ahead, can you please let me know in the chat section, am I clearly visible and is my voice clearly audible to all of you? Okay, so last class रे आमे पढ़िथिले प्रेसिडेंट जो थरे कि आमे मल्टीपल ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करिथिले एंड आज जो क्लासेस अछि आज रो क्लासेस रे कोन आमे पढ़िबा कोन पढ़िबा वाइस प्रेसिडेंट राइट सो आई डोंट नो व्हाई वाइस प्रेसिडेंट ओके सो नमस्कार ज्योति वेरी गुड इवनिंग मानवी ओके सो आज जो क्लास हम आम ए पढ़िया कौन ना वाइस प्रेसिडेंट आम पढ़ा ठीक अच्छे अच्छा सो वाइस प्रेसिडेंट विषय में पढ़िया पूर्व मुझे गोटे कथा कही रखी कि वाइस प्रेसिडेंट तुम बर्तमान जो भी व्हिच एवर एग्जाम यू आर गोइंग टू गिव व्हेदर इट इज योर टीजीटी व्हेदर इट इज योर जेटी योर बीएड और सीटी एनी काइंड ऑफ एग्जाम तुम आगू को दबाक जाओ तुम आरआई भी हो गला इवन तुम ओसीएस भी ओडिशा सिविल सर्विस भी सबुथे वाइस प्रेसिडेंट इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर फॉर दिस ईयर इट्स ए वेरी इंपोर्टेंट थिंग फॉर दिस ईयर आई टेल यू हाउ नमस्कार सौदामिनी आई विल टेल यू हाउ तुम रिसेंटली जानी थी कि आमर जे पूर्वतन वाइस प्रेसिडेंट थिले किए थिले ना किए कह पार हु वाज द फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जे पूर्वतन थिले किए जगदीप धनकर सर थिले तो सी कौन निजर पदरु रेजिग्नेशन देकी सी तांको परे नुआ वाइस प्रेसिडेंट आमर इलेक्ट हेले फॉर दैट पर्पज वाइस प्रेसिडेंट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर फॉर दिस ईयर इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर फॉर दिस ईयर ओके you will definitely get 1 or 2 question in your upcoming exams okay so let's start the today's session on vice president and जेमती कि मु सब बेले तुमको क्लास रो स्टार्टिंग रे कहि रखे कि जहां भी हमें पढ़िबा हमें कोन तुम एंटायर पीडीएफ टाको हमर टेलीग्राम चैनल वेदांग टीचिंग रो टेलीग्राम चैनल रो तुम डाउनलोड करि परिबो नमस्कार कार्तिक ओके एंड जो मानकू ए टाइप रो माइंड मैप दरकार अछि जो मानकू ए टाइप रो माइंड मैप दरकार अछि एंटायर जिंस को रिवीजन करबा बहुत लाइक सबु जिंस को अगेन एंड अगेन पढ़ले बहुत डिफिकल्ट सेति पई सो एंटायर जिंस को मु गोटे माइंड मैप रे बने की रखिछि ओके सो दैट तुमको माने कोन तुमको रिवीजन करबाटा बहुत इजी हे जिवो तुमको रिवीजन करबा इजी हेतिबो एंड तुम पे आज आउ गोटे बहुत माने तुम मान को बेनिफिट पई तुम मान सबले so hello everyone hope the technical issue is resolved now so can anyone please let me know in the chat section am I clearly audible and is my picture clearly visible to you all of you
I'm really sorry for the technical issues. The class get little bit delayed. Everything good? All good? Okay. So without doing delay, let's start the session. ମୁଁ ଜାଣିନି ମନେ ଔଷଧ ହଉଛି କଣ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ରେ ବି ସେମିତି ଲାଇକ୍ very good evening Umakant. I don't know what's wrong with me. Like last class रे भी सेमती किसी technical issue ହେଲା and ए class रे भी सेम technical issue होची. I don't know what's wrong, like what's going on with me. Okay, so it might be some bad luck. I don't know. Okay, so okay, okay. Let's start the session. Before going to start the session, ମୁଁ ତମ ପାସକୁ ଏତି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି कि ତମର जो एंटायर ତମେ ଯଦି ଭାଇस प्रेसिडेंट पढ़ी थांदा ताले तम कोन बहुत टाइम लागि थांदा तो तमे जो माने हमरो पेड बैच जॉइन करछ जो माने अदर बुक्स रु रेफर करके पढुछ भी त माने पढी साला पर तुमको रिवीजन न बहुत प्रॉब्लम रुहे ठीक अछि रिवीजन बहुत प्रॉब्लम रुहे सेति पय से रिवीजन प्रोसेस टा को सिंपलीफाई करिया पय मु कोन माइंड मैप अटैच कर देछि पीडीएफ रे तमे दे एंटायर पीडीएफ को डाउनलोड करियो चाहिबो ताले तुम डाउनलोड करि परिबो कोठु ना वेदांग टीचिंग रो टेलीग्राम चैनल रु बट तुमको खाली यदि ओनली ए माइंड मैप ही दरकार ओनली माइंड मैप ताहले तमे स्टडी विथ बिमोहित इट्स माय पर्सनल टेलीग्राम चैनल तमे एडी जाई कि कोन एउडू तमे माइंड मैप डाउनलोड करि परिबो ओनली माइंड मैप एंड क्लास रो लास्ट जाके रुहो यू हैव ए सरप्राइज लाइक आई हैव प्लान्ड ए सरप्राइज फॉर यू जो माने सबले कहू सर हमर मन पडुनी परीक्षा रे आई हैव मोर परीक्षा रे मन पडुनी कि मु सर पढी दिली बट एग्जाम हॉल मोर रिकॉल करि पालिनी तो से मानो पई फ्री इनिशिएटिव इट्स माय ओन पर्सनल फ्री इनिशिएटिव फ्रॉम माय एंड तो लास्ट जाके रुहो आई विल रिवील ए फ्री इनिशिएटिव फॉर यू जो कि तुम कौन जिन जोड़ा इजिली रिकॉल करि परिबो बा मन रखि परिबो यदि वाइस प्रेसिडेंट कुआ जाय तले हम जदी हमर जो प्रेसिडेंस रो ऑर्डर अछि कोन ही इज द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन ऑफ द नेशन देखिबा ताले कोन वाइस प्रेसिडेंट हा पे क्वालिफिकेशन कोन मते को चार सेक्शन को व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिनिमम एज केते को फर्स्ट द सिटीजन ऑफ इंडिया हो दरकार एंड मिनिमम एज हो दरकार 35 ईयर जेमती प्रेसिडेंट कर थिला कि वेरी गुड शिवानी जेमती प्रेसिडेंट कर थिला कि प्रेसिडेंट हवा पई यू मस्ट हैव टू बी एलिजिबल टू बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा सेमती वाइस प्रेसिडेंट हवा पई हेलो क्वीन वाइस प्रेसिडेंट हवा पई मते कुह तुमको मिनिमम तमे को हाउस रो मेंबर हवा आवश्यक लेट मी नो इन द चैट सेक्शन गाइस yes you must have to be a member of राज्य सभा and मन था आउट जिंस यदि तुम आर्टिकल टिके रिवीजन करै देबी ताले वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस रो आर्टिकल कोन देयर शुड बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एटा केते नंबर आर्टिकल 63 जे वाइस प्रेसिडेंट सी होचंती कोन सी होचंती बाय डिफॉल्ट चेयरमैन ऑफ द राज्य सभा दैट इज मेंशन इन व्हिच आर्टिकल 64 तापरे जत्ते बेले प्रेसिडेंट कोन रेजिग्नेशन दियंती किंबा इम्पीचमेंट हुंती सेते बेले वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड मैक्सिमम केते टाइम पे से प्रेसिडेंट भलिया काम करि परिबे तुमको लास्ट क्लास रे मु कहितली को मैक्सिमम केते टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट वर्क करि परिबे मैक्सिमम 6 मंथ पे एटा 65 आर्टिकल रे लिखा हिची एंड आउट कथा मते मन थाओ जेमती मु तुमको कहितली जते जण इलेक्टेड मेंबर रहिले कहारो लोकसभा रो राज्यसभा रो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रो से माने वोट दे पारुथिले काहाकू प्रेसिडेंट को सेमती all the members of the parliament whether they are elected or they are nominated they all can combinedly give vote to whom vice president of india सेटा आर्टिकल 66 रे लिखा हिची 67 लिखा हिची तांको टर्म होची 5 वर्ष अच्छा मते को प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन दउथिले वाइस प्रेसिडेंट को एबे वाइस प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन देबे काहाकू को कमेंट रे को वाइस प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन काहाकू देबे से देबे काहाकू प्रेसिडेंट को ही देबे ठीक अछि एंड तांको ओथ एंड अफर्मेशन मध्य प्रेसिडेंट दियंती व्हिच इज मेंशनड अंडर आर्टिकल 69 वेरी गुड मानवी उमाकांत क्वीन शिवानी यू अंजलि all of you are giving most of the answer correct I'm so happy for you guys okay आ जदी मन त जदी प्रेसिडेंट किबा वाइस प्रेसिडेंट रो इलेक्शन रिलेटेड किछि भी डिस्प्यूट हुए ताहले
कौन द रिजोल्यूशन विल बी प्रोवाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ठीक अच्छे अच्छा मत गोटे क्वेश्चन आंसर कह मुझे तुमको कही कि जो प्रेसिडेंट इम्पिच हुआ से आमर स्पेशल मेजोरिटी रे इम्पिचमेंट प्रोसीजर स्टार्ट हुए मत बर्तमान को जो भाइस प्रेसिडेंट इम्पिचमेंट हुआ whenever we are trying to impeach vice president of India then को हाउस रे को मेजोरिटी रे बिल पास हुए को जल्दी चार सेक्शन को एटा जाना पड़ियो कि तमे केते कांसेप्ट को बुझिचो ओके लेट्स सी यस इफेक्टिव मेजोरिटी इन राज्यसभा एंड स्पेशल मेजोरिटी इन लोकसभा एटा मन रखथिबो okay so now let's move further and start the MCQ जो मानु को ए बडा माइंड मैप डाउनलोड करिवार अछि तुम माने मो पर्सनल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ बिमोहित तमे एटू विजिट करो करी कि तमे ए बडा माइंड मैप डाउनलोड करो एंड तुमको लास्ट रे मु कहिबी कि लास्ट रे कोन कहिबी कि तमरो मोस्ट ऑफ द पिला तमे कुहो कि सर हमर मन रहुनी तो लास्ट रे मु किछटा जिंस तुम पे रखी इट्स ए फ्री इनिशिएटिव कंप्लीटली फ्री इनिशिएटिव फ्रॉम माय एंड तुम केमती जिनसटा मन रहबो एंड तुम के इजीली जिनसटा रिवीजन कर परिबो ठीक अछि अपार्ट फ्रॉम दिस माइंड मैप एंड हां अड कथा जो लोकसभा रे सिंपल मेजॉरिटी सॉरी मु भूल कह देली इट्स सिंपल मेजॉरिटी नॉट स्पेशल मेजॉरिटी लोकसभा रे सिंपल मेजॉरिटी एंड राज्यसभा रे इफेक्टिव मेजॉरिटी राइट ओके सो लेट्स स्टार्ट द एमसीक्यू फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर मूविंग अहेड आमर यूट्यूब रे जो क्लासेस होची समस्त कहि रखिबी कि सोमवार बुधवार एंड शुक्रवार पॉलिटी मु क्लास नउची संध्या 6 रु 7 ठीक अछि सो लेट्स मूव अहेड एंड स्टार्ट टुडेस क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग वाइस प्रेसिडेंट जो इलेक्टेड होंती से मेंबर माने को मते को किए वाइस प्रेसिडेंट को वोट दियंती को ऑप्शन पढ़ो आंसर को ओके only elected members of both the house of the parliament all the members of both the house of parliament only elected members of the Rajya Sabha and state assembly only elected members of the state assembly so let's see how many of you are giving the right answer okay yeah most of you have given the right answer all the members yes all the members of parliament अच्छा मते गोटे क्वेश्चन आंसर दियो जेमति कि प्रेसिडेंट को इलेक्शन बेले 50 जन कोन प्रपोजर थिले एंड 50 जन कोन सेकेंडरी थिले सेमति वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन समय रे केते जन एमपी प्रपोजर थांती एवं केते जन एमपी सेकेंडर थांती जल्दी मते आंसर कर yes you all are right 20 MPs are प्रपोजर माने से माने प्रपोज करिवे लेट सपोज शिवानी को करा हबो वाइस प्रेसिडेंट तो शिवानी को 35 वर्ष हला परे मन रख मिनिमम एज केते मिनिमम एज होची 35 हला 35 वर्ष हला परे तांकू मिनिमम 20 जण एमपी प्रपोज करिवा दरकार राइट अच्छा मते कहो प्रेसिडेंट कर जो हमर जो वोटिंग सिस्टम होतला कोन होतला को proportional representative system होतला by single transferable vote secret ballot process रे same process applied for vice president of India right clear अच्छा मते तार गोटे क्वेश्चन आंसर एबे गोटे क्वेश्चन मते आंसर कहो कि जदी वाइस प्रेसिडेंट न रहिबे ताहाले जेमति प्रेसिडेंट न रहिले वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करूथिले as a president of India सेमती यदि वाइस प्रेसिडेंट न रहिबे तले किए वाइस प्रेसिडेंट को कामटा करिवे हु कैन से किए वाइस प्रेसिडेंट को काम करथुवे करिवे को एनीवन इन द चैट सेक्शन if president will not be there then vice president will act as the president of India so my question is if vice president will not be there then who will act as the
who will act as the vice president of India? Nobody. देखो यदि भाइस प्रेसिडेंट रिजाइन करती ताहले कौन विदिन 6 मंथ फ्रेश इलेक्शन हम आउ जड़े भाइस प्रेसिडेंट बछा हे किंतु राज्यसभा हाउस को रन करने जेहेतु आज पर आर्टिकल 64 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भाइस प्रेसिडेंट इज द कौन बाय डिफॉल्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ताहले भाइस प्रेसिडेंट नॉट सीजीआई भाइस प्रेसिडेंट को प्लेस रे राज्यसभा सेशन को चेयर करिवे किए ना डेप्यूटी चेयरमैन ठीक अच्छे डेप्यूटी चेयरमैन चेयर करेंगे क्या ना राज्यसभा को अच्छा मत गोटे क्वेश्चन आंसर कह आमर करेंट आमर वर्तमान भाइस प्रेसिडेंट किए अच्छे हु कैन से हु इज द करंट भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एनीवन नोबडी यस सीपी राधाकृष्ण सर वेरी गुड अच्छा मो क्वेश्चन होची क्वेश्चन एटा नथला कि करंट भाइस प्रेसिडेंट किए क्वेश्चन को एबे आसिली सी केते तम भाइस प्रेसिडेंट को करंट भाइस प्रेसिडेंट होचंती केते तम भाइस प्रेसिडेंट एवरीवन यस सी होचंती 15तम भाइस प्रेसिडेंट 14तम थिले जगदीप धनकर सर ओके द सेकंड क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन consider the following statement which of these statements is or are correct कोटा correct पचारची कौन पचारची कोटा correct पढ़ो like the election of the president the election of vice president is indirect okay कौन एटा indirect election हुए the member of the state legislature play an important role in the election of the both तो कौन हम आंसर भल से पढ़ो ये कौन देखी द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इलेक्शन ऑफ द बोथ ऑल ऑफ यू रीड द आंसर करेक्टली कोई ओनली कोटा ठीक हबो को यस मेनी ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर इट गोज लाइक द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्ट यस वेरी गुड दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट कहीं डायरेक्ट इलेक्शन माने कौन डायरेक्ट इलेक्शन कहाँ होची डायरेक्ट इलेक्शन आम एमएलए एमपी को डायरेक्ट इलेक्ट करूचे जो माने हमरो लोकसभा जो माने एमपी रही गले किंबा हमर जो माने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रो जो माने एमपी रही गले सेमानन को हमें कौन सेमानन को हमें डायरेक्ट इलेक्ट करूछु को सिस्टम रे ना फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ता माने कौन ना आमे भोट दबा जहा को सबुटु अधिका भोट मिलिबो से लोक इलेक्टेड हेकी एमएलए किंबा एमपी हबो कोन हमर लोकसभा हो किंबा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रो हो किंतु जदि एटी वाइस प्रेसिडेंट हे गले किंबा हमर प्रेसिडेंट हे गले से माने कोन दे ऑल आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड राइट दे ऑल आर व्हाट दे ऑल आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एमएलए और एमपीज चूजन बाय अस ठीक अछि तो एटा को कोन कहै जोटा डायरेक्ट इलेक्शन कहे फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो अमेरिकार इलेक्शन हुए जो व्हेन यूएस इलेक्शन हुए मन था यूएस इलेक्शन में जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थाए जो कौन जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थाए से जगह कौन से जगह डायरेक्ट भोट दियंती प्रेसिडेंट किंबा वाइस प्रेसिडेंट को बाछिबा पाई तो ए स्टेटमेंट हमर ठीक अछि हमर कौन हमर होची को टाइप रो गवर्नमेंट हमर होची व्हिच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इंडिया हैव लेट मी नो इन द चार्ट सेक्शन इंडिया को टाइप रो गवर्नमेंट इंडिया रो कौन पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ए जो पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया रो को जगह रो आसी छी यस को जगह रो आसी को एनीवन पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया रो को जगह रो आसी छी यूके रो आसी छी वेरी गुड ओके सो इट कला द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर प्लेज इंपोर्टेंट रोल नो वाइस प्रेसिडेंट को किए भोट दियंती एबे संगे संगे कहली किए ना ऑल द कौन ऑल द एमपीज इन द व्हाट पार्लियामेंट व्हेदर दे आर इलेक्टेड व्हेदर दे आर नॉमिनेटेड इट डजंट मैटर से लोकसभा रो होंतु किंबा राज्यसभा रो होंतु ठीक अछि अच्छा मते गोटे क्वेश्चन कह यदि इलेक्ट करिया पई तांकू एमपी माने भोट दियंती ताहले यदि इलेक्ट करिया पई तांकू एमपी माने भोट दियंती टर्मिनेट करा जाए कि रिमूव करा जाए रिमूवल केस रे को माने वोट दियंती
रिमूवल केस रे को माने वोट दियंती रिमूवल केस रे को माने वोट दियंती को एनीवन and guys those who are new in the session do like the session if you are new in the channel then don't forget to subscribe the channel to get further updates of our upcoming classes सही एमपी माने वोट दियंती हाँ भाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करिया पई ना ना नॉट ओनली इन राज्यसभा रे इफेक्टिव मेजॉरिटी रे पास हुए बिल एंड हमर लोकसभा रे सिंपल मेजॉरिटी रे बिल पास हुए मन रखथिबो ठीक अछि ओके सो एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी टीजीटी ओके सो तमन जदी हैंड होल्डिंग गाइडेंस दरकार 1-to-1 मेंटरशिप दरकार along with all the chapter को simplify करके पढ़िबार अछि ताले you can check out our कर्तव्य batch which is ongoing in our Vedang classes applications the price is 1499 and if you are using this code BRG10 then you will get 10% discount okay so if you want to if you really want to take your preparation in the next phase then you can check out this course okay so I'm next question को आसी जिबा without getting any delay the third question is on your screen let's see what is that given below are two statements one is assertion and another one is reason ठीक अछि तमे assertion को पढ़ो and reason को पढ़ो then तमे कहो कि कोटा ठीक अछि कि कोटा भूल अछि and कौन से assertion से reason को justify करूची ना करूनी ठीक in order to be eligible for the election as a vice president गोटे vice president पाई election पाई eligible हा पाई a person must be qualified for the election as a member of the upper house मु तुम कहितली दीटा हाउस अछि पार्लियामेंट रे कोन दीटा हाउस अछि गोटे कहितली कोन गोटे कहितली अपर हाउस गोटे कहितली लोअर हाउस मते एबे को अपर हाउस काहा को कहितली एंड लोअर हाउस काहा को कहितली मते चार सेक्शन आंसर दरकार द वाइस प्रेसिडेंट इज अ चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा को मु कोन कहितली सर ओनली एसएसबी टीजीटी यू कैन क्रैक द एमसीक्यू फॉर ओपीएससी प्रीलिम एज वेल एज फ्रॉम दिस क्लास थैंक यू सो मच नैवेद्य सर Navedu sir is the is my fellow teacher with this organization. He taught history and so many other GS subjects in a very well manner, and he's a very good singer as well. Okay, so question answer को yes तो आंसर इज ए समस्त ठीक कहिछ बट मन था अपर हाउस कोन अपर हाउस माने होची राज्यसभा हैला ताको आउ कोन कजे ता कोन कजे लोअर हाउस माने कोन ना लोकसभा ठीक अछि तो एठी लिखा आछि एलिजिबल टू बिकम ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट तुमको कोन राज्यसभा रो मेंबर हबाकू माने एलिजिबल हबा दरकार अच्छा मते को आउ कोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अछि टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आउ कोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अछि को फर्स्ट से लोक कोन हबा दरकार से लोक सिटीजन ऑफ इंडिया हबा दरकार मन रखता से लोक कोन भारतर नागरिक हबा दरकार बेले बेले एग्जाम रे ट्विस्ट करी पचार दबो दैट पर्सन शुड हैव टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ सिटीजन हबा दरकार ना न से बाय बर्थ हो चारटा वे रे मु तुमको कहितली इंडिया रो सिटीजन हबा पय चारटा प्रोसीजर अछि कोन कोन कहितली कि कहि परिबो चार सेक्शन में फर्स्ट कहितली बाय नेचुरलाइजेशन तापर कहितली बाय बर्थ तापर कहितली बाय इंटीग्रेशन ऑफ टेरिटरी तापर कोन कहितली बाय डिसेंट मन अछि ना मन नाही पांचटा वे अछि आ गुटे कोन बाय रजिस्ट्रेशन ठीक तो से को भी वे सिटीजन हेले चलिबो बट सिटीजन ऑफ इंडिया हवा दरकार सेतिकी तापर तांको एज केते हवा दरकार मिनिमम 35 प्लस एज हवा दरकार एंड राज्यसभा रो एमपी हवा पई कोन एलिजिबल थिया दरकार तापर Vice chairman is the vice president is the by default chairman of Rajya Sabha तो ए जो by default chairman of the Rajya Sabha एटा केते नंबर आर्टिकल मेंशन अछि कॉन्स्टिट्यूशन नो को दिस इज मेंशनड अंडर 64 आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अछि ओके सो एटा मत मु जडा कहबार थला कहि देली अच्छा मते को केते जण प्रपोजर दरकार एंड केते जण सेकेंडरी दरकार गोटे लोक को
राज्यसभा सॉरी गोटे लोक को भाइस प्रेसिडेंट ठिया हेले केते जण प्रपोजर दरकार एंड केते जण सेकेंडरी दरकार 20 यस 20 एंड सेटा जदी प्रेसिडेंट केस रे होची तले केते जण जदी प्रेसिडेंट को केस आसुची तले केते जण प्रपोजर एंड केते जण सेकेंडरी इन द मैटर ऑफ प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट को कथा पचारुची यस 50-50 मन नथिबो इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट 50 जण प्रपोजर एंड 50 जण सेकेंडरी हवा आवश्यक ठीक अछि ओके vice president may be removed from his office by a resolution of but को हाउस रे फर्स्ट रिजोल्यूशन पास हुए भाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करिया पई को ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन इन व्हिच हाउस resolution should have to be passed first to remove the vice president of India yes it's council of state माने कौन राज्यसभा बा अपर हाउस ठीक अच्छे अच्छा मत कह को मेजोरिटी रे बिल पास हुए राज्यसभा रे भाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करिया पई को मेजोरिटी रे बिल पास हुए let me know in the chat section on which majority the bill should have to be passed to remove the vice president of India anyone not special majority Tony think twice एबे कहिछि तमे जदी निजे मन इच्छा माने चार्ट रे कोन जानि छ न लिखिकी मु जोडा कहूछि सुनि थांतो you could have answered the question correctly yes everyone are correct it should be effective majority अच्छा इफेक्टिव मेजोरिटी राइट एंड लोकसभा रे को मेजोरिटी बिल पास हुए को मते लोकसभा रे को मेजोरिटी बिल पास हुए वेरी गुड शिवानी द आंसर इज लोकसभा रे सिंपल मेजोरिटी एबे मोर गोटे क्वेश्चन आंसर को जदी भाइस प्रेसिडेंट करो रिमूवल पई राज्यसभा रे बिलटा पास होआ पई आसिला ठीक अछि आउ थरे सुनो जदी भाइस प्रेसिडेंट करो रिमूवल पई राज्यसभा रे बिलटा आसिला ताहले राज्यसभा को किए प्रिजाइड करिवे आज यू नो भाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा किंतु जदी ना सिंपल मेजोरिटी क्वीन लोकसभा रे सिंपल मेजोरिटी एंड राज्यसभा रे इफेक्टिव मेजोरिटी ठीक अछि जदी भाइस प्रेसिडेंट करो रिमूवल पई राज्यसभा रे बिलटा इंट्रोड्यूस होला ताहले राज्यसभा को किए प्रिजाइड करिवे वेरी गुड उमाकांत वेरी गुड शिवानी किए प्रिजाइड करिवे ना हमरो डेप्यूटी चेयरमैन काहे ना माने हमर जो भाइस प्रेसिडेंट से तो निजे एमपी छेबे यदि निजे एमपी छेबे तले से केमति निजे प्रिजाइड करिवे राइट अच्छा आउ गुड क्वेश्चन मते आंसर को कैन इन द ड्यूरिंग द रिमूवल प्रोसीजर ongoing in the lower house or in the upper house can vice president has the authority or can vice president is permissible to sit and speak in the lower house or in the upper house ताको कोन बसिबा पई किंबा सेठी बसी की निजर मत रखिया पई सेति की तांको पावर दिया हेची को yes or no yes he or she can sit and speak in the house बट से भोटिंग राइट तांकर नाही आउ मन तो भाइस प्रेसिडेंट जदी राज्यसभा रे बिलटा टाई हे गला ओनली दैट सिनेरियो he can use his casting vote power ठीक अछि जदी बिलटा टाई हला नहले फर्स्ट इंस्टेंस रे तांकर वोट दबार अथॉरिटी नॉर्मली न थाए ठीक अछि ओके एंड आउट कथा म तुम पचरछि मते को अच्छा भाइस प्रेसिडेंट को निजु को इनोसेंट प्रूव करिया पई तांको केते दिन रो टाइम फ्रेम मिले हाउ मेनी डेज टाइम फ्रेम द भाइस प्रेसिडेंट विल गेट टू प्रूव हिम और herself innocent तांको केते दिन टाइम फ्रेम मिले निजु को इनोसेंट प्रूव करिया पई एनीवन सेम जस्ट सेम विथ प्रेसिडेंट तांको 14 डेज रो टाइम पीरियड मिली थाए ठीक अछि क्लियर ओके जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन
कर्तव्य ब्याज विषय में तुम ऑलरेडी कहि देछि ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा द प्रपोजल रिलेटिंग टू dismissal of the vice president can be presented in what proposal related to dismissal of the vice president can be presented in को हाउस रे फास्ट इंट्रोड्यूस हुए मु तुमको कहली कि लोकसभा रे को मेजॉरिटी लोकसभा रे कहितली सिंपल मेजॉरिटी राज्यसभा रे इफेक्टिव मेजॉरिटी तो राज्यसभा रे इंट्रोड्यूस हुए जेहेतु सी होउछन कोन चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा सेति पई सेटा तांकू इफेक्टिव मेजॉरिटी अच्छा इफेक्टिव मेजॉरिटी कोन बुझिस तो यस श्रावणी 14 डेज टाइम फ्रेम मिले इफेक्टिव मेजॉरिटी कोन जानिछो इफेक्टिव मेजॉरिटी कोन व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी हु कैन से हमरो चारि प्रकार बेसिकली मेजॉरिटी अछि गोटे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी गोटे इफेक्टिव मेजॉरिटी गोटे सिंपल मेजॉरिटी गोटे स्पेशल मेजॉरिटी सेमती स्पेशल मेजॉरिटी को दी भाग रे विभक्त कराइछि वन इज स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द होल हाउस रो and the present and voting person should be 50% more than 50% आउ गोटे अछि कोन ना स्पेशल मेजॉरिटी विथ स्टेट रैटिफिकेशन बट मो क्वेश्चन थिला व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी समस्त कहउछन कि 50 yes everyone are giving the right answer but तुम मैंने इफेक्टिव रो मीनिंग ता बुझी परलनी इफेक्टिव रो मीनिंग तुम मैंने बुझिनो समस्त तो 50% रो अधिक ना इफेक्टिव रो मीनिंग मन रखता सुनो मु तुमको इफेक्टिव मेजॉरिटी बुझौची समस्त भूल लिखिछ यू ऑल आर रॉन्ग इफेक्टिव मेजॉरिटी माने भाव देखो एटी इफेक्टिव माने कोन इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस बुझि परछो इफ कोन पचारछि इफेक्टिव स्ट्रेंथ अच्छा इफेक्टिव स्ट्रेंथ काहा को कहिबा फर्स्ट कथा इफेक्टिव स्ट्रेंथ काहा को कहिबा इफेक्टिव स्ट्रेंथ कहिबा मन रखता लेट सपोज टू राज्यसभा रो मैक्सिमम मेंबर होचन केते 245 वर्तमान धरि नियो ता भितरु 5 जण एमपी कर देहांत घटिछि आउ 4-5 जण एंटी डिफेक्शन लॉ की कोथरे तांको पोस्ट वैकेंट अछि तो जदी सेमती 5 जण वैकेंट अछंती ताहाले तार इफेक्टिव स्ट्रेंथ धरक 2-3 जनकर डेथ होईची आ 2-3 जण एंटी डिफेक्शन लॉ रे से माने कोन सस्पेंड हेचंती ताहाले वर्तमान इफेक्टिव स्ट्रेंथ हला केते 240 5 जण को जो 5 जण कर पोस्ट वैकेंट अछि ताकू काढी दियो ठीक अछि ताकू जो मानकर पोस्ट वैकेंट अछि ताकू काढी दियो केते रहला 240 तार 50% रु कोन तार 50% रु +1 ता माने 120 होची यार 50% +1 होची केते 121 जण मिनिमम वोट दबा दरकार एबे इफेक्टिव मेजॉरिटी बुझी पाइलो इफेक्टिव मेजॉरिटी यस वेरी गुड जो माने भी कहिलो वेरी गुड ओके एबे इफेक्टिव मेजॉरिटी तम जोडा कहूनो सर टोटल मेंबर रो 50% +1 सेटा होची कोन कहलो सेटा होची एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो माने भी कहूचो सर टोटल मेंबर रो 50% +1 दैट इज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी माने एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस रो 50% +1 क्लियर सिंपल मेजॉरिटी जानिचो प्रेजेंट एंड वोटिंग रो 50% रु एक अधिक स्पेशल मेजॉरिटी जानिचो 2/3 मेंबर होबा दरकार एंड जो प्रेजेंट रहबा दरकार केते ना टोटल स्ट्रेंथ रो 50% रु अधिक लोग प्रेजेंट रहबा दरकार एंड से जति की प्रेजेंट रहले तांकर 2/3 +1 वोट मिसिबा दरकार ठीक ठीक क्लियर बुझी पारलो इफेक्टिव मेजॉरिटी बुझी पारलो ना का डाउट रहला many of you are focusing on the chat section do ignore the chat section whatever I am telling you please listen to me okay so the next question who is the chairman of the Rajya Sabha chairman ke it's a very simple question it's a very basic question and it was asked in your B.Ed exam so many of you are aware that vice president is the chairman of the Rajya Sabha eta kete number article lekha heiche article 64 अच्छा मते को अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा एटा बहुत सिंपल क्वेश्चन थला आधर धरि की बसले किछि लाभ हो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा among the four pairs given below which one consists of a correct combination
of कौन dignitaries who became vice president after having held diplomatic post ambassador and high commission आंको भितरु को दि जण थिले जे कि परवर्ती अवस्था रे कोन भाइस प्रेसिडेंट हेतिले किंतु फर्स्ट से कोन थिले ना एम्बेसडर थिले आ हाई कमिशनर थिले कहि परबो के थिले आंको भितर किए फर्स्ट डिप्लोमेटिक पोस्ट थिले एवं परवर्ती अवस्था रे से कोन भाइस प्रेसिडेंट हेतिले टोनी कहउछन्ते ए नो टोनी ए इज नॉट द आंसर चलो टोनी कथा रे टोनी रो आंसर को मु फर्स्ट एलिमिनेट कर देली ए इज नॉट द आंसर नाउ फाइंड द आंसर फ्रॉम द रेस्ट 3 मन था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण सर and VB गिरी सर both of them were first कौन से माने फर्स्ट एम्बेसडर थिले आउ हाई कमिशनर थिले परवर्ती अवस्था रे कौन परवर्ती अवस्था रे they became what they became vice president of इंडिया किंतु मन था प्रथम भारत रो प्रथम भाइस प्रेसिडेंट के थिले ना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थिले अच्छा मते को जदि से भारत रो प्रथम भाइस प्रेसिडेंट थिले तांको बर्थडे को तांको जन्मदिन को मन रखिया पई को दिवस भावे पालन करा जाय नो श्रावणी द आंसर इज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण सर एंड वीबी गिरी सर सेप्टेम्बर 5 यस सेप्टेम्बर 5 एंड टीचर्स डे मन रखथिबो टीचर्स डे भाबरे पालन करा जाय हला सेप्टेम्बर 5 को कहार जन्मदिन को मन रखिया पाई डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को जन्मदिन को मन रखिया पाई ठीक ओके सो हु अमंग द फॉलोइंग हैज हेल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंको मध्यरु किए जे कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रो ऑफिस को होल्ड करिथिले को try to answer the question I'm looking for your chat section what about KR नारायण देखो भल से पढ़ो मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये किए थिले लास्ट क्लास रे मु कहिथिली किए थिले लास्ट क्लास रे कहिथिली मोहम्मद हिदायतुल्लाह तांको विषय मु कहिथिली जे कि वाइस प्रेसिडेंट रु कोन प्रेसिडेंट हेथिले मन अछि लास्ट क्लास रे कहिथिली तो ए इज द राइट आंसर यदि ए इज द राइट आंसर ताले सी कटि गला डी कटि गला एबे कोन ए आउ बी भितरे कंफ्यूज हम जानि गलो यदि ए हबो ताहले डी भी हबो काना ए एथरे अछि ए के एथरे अछि 4 एथरे अछि 1 एथरे अछि 4 भी एथरे अछि एबे मते को फकरुद्दीन अली अहमद नीलम संजीवा रेड्डी ये थिले वाइस प्रेसिडेंट नीलम संजीवा रेड्डी कोन थिले ही वाज द कोन थिले प्रेसिडेंट थिले जदि समस्त आंकना ना जानि न बट आंकना जानि थिबो नीलम संजीवा रेड्डी आंकना समस्त जानि थिबो तो ये कोन ये वाइस प्रेसिडेंट कोन थिले ना नथिले हु कैन से थिले नथिले हु कैन से नीलम संजीवा रेड्डी वाज नॉट द वाइस प्रेसिडेंट ही वाज द प्रेसिडेंट तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ठीक अछि एंड जो माने भी बीएड पे प्रिपेयर करछो किबा अलगा जो भी एग्जाम पे प्रिपेयर करछो मन रखथाओ ने अपकमिंग संडे तमरो मैराथन क्लासेस होबा को जाउची एंड मोर क्लासेस अछि तमरो 11 am टू 1 pm हला मु पॉलिटी और इकोनॉमी रो क्लास नेबी एंड मन रखथिबो कि लास्ट क्लास जेमति हमर समस्त लाइक एन्जॉय करथिले सो कोन लास्ट क्लास जेमति हम समस्त एन्जॉय करथिले
तो सेमती ए क्लास रे हम समस्त कोन भल से प्रैक्टिस करके आस्थिबो हमें रिवीजन करबा सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 62 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अछि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होचन कोन आर्टिकल 62 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तापर कहूँ इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 65 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टर्म्स ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 59 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मु तुमको एबे रिवीजन करैथिले आर्टिकल मु तुमको कोन एबे रिवीजन करैथिले आर्टिकल मते एबे मते को आंसर को भल से देखि को मु तुमको आउथरे आर्टिकल न रिवीजन करे दोछि रो मु तुमको आउथरे आर्टिकल रिवीजन करे दोछि आर्टिकल ले पिला माने कंफ्यूज होंती मु तुमको माइंड मैप रो आर्टिकल रिवीजन करे दोछि एंड जो मानु को माइंड मैप दरकार तो माने स्टडी विथ बिमोहित टेलीग्राम चैनल को जाइके डाउनलोड कर दबो मन था आर्टिकल 63 कोन कहूछि देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 64 कहूछि जे वाइस प्रेसिडेंट रहिबे से बाय डिफॉल्ट राज्यसभा रो चेयरमैन हे जिवे 65 कोन कहूछि ना प्रेसिडेंट को एब्सेंट टाइम रे वाइस प्रेसिडेंट रो काम को तुलेबे 66 कोन कहूछि ना इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ठीक अछि 67 कोन कहूछि तांकर टेन्योर जोटा कि 5 वर्ष 69 कहूछि जोटा कि ओथ एंड अफर्मेशन ठीक अछि मन नैला एबे सेही बेसिस रे क्वेश्चन को सॉल्व करो दोज हु आर गेटिंग कंफ्यूज्ड सॉल्व द क्वेश्चन नाउ को yes none of the answer is correct मते एबे कहि दियो ठीक है मु तुमको एबे कोन कहली देयर शुड बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एटा केते नंबर आर्टिकल हु कैन से एटा केते नंबर आर्टिकल एटा कहूची नॉट 63 दिस इज मेंशनड अंडर एटा 62 नो 63 एटा 63 नंबर आर्टिकल ले मेंशन अछि अच्छा मते को तांकर टर्म्स ऑफ द ऑफिस एटा केते नंबर मु केते कहले एबे फर्स्ट वाला 63 सेकंड को तांको इलेक्शन प्रोसीजर केते नंबर आर्टिकल हु कैन से एबे कहली जणा पड़े तुम केते कंसंट्रेट हेकी क्लास को करूथलो yes 66 not 65 अच्छा तांको टर्म टा टेन्योर टा केते 60 के कहबो तांको टेन्योर टा हु कैन से तांको टेन्योर टा केते नंबर yes 67 ठीक अछि जिबा तो सब तक भूल अछि नॉन ऑफ द पेयर्स आर करेक्ट राइट तो जन कि मु कहली कि मन तो प्रेसिडेंट कर टर्म टा होची 56 किंतु वाइस प्रेसिडेंट कर केते 67 तो प्रेसिडेंट कर होची 56 तापरे इलेक्शन टा 66 आउ वाइस प्रेसिडेंट कर इलेक्शन माने देयर शुड बी वाइस प्रेसिडेंट 63 ओके व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनकरेक्ट कोन पचारची इनकरेक्ट पचारची ठीक अछि कोन पचारची इनकरेक्ट पचारची तो हाँ प्रेसिडेंट कर टेन्योर टा होची 56 प्रेसिडेंट कर टर्म टा होची 56 I was telling the tenure of vice president. Okay. So, what I incorrect पचारची the elected college for election to this office consists of the elected members of both the houses of the parliament. एटा ठीक अछि ना भूल अछि को he can hold the office of the president for a period not exceeding 6 months in the absence of the president. एटा कोन ठीक अछि ना भूल अछि for election to his office तांको ऑफिस इलेक्शन पई a candidate's nomination paper must be subscribed by at least 20 electors and as a proposer and 20 electors as a seconder जेमति कि फर्स्ट रे कोन कहिछि
कौन कही पढ़ इलेक्टोरल कॉलेज रो किए रहा दरकार सब तक एमपी रहा दरकार बोथ द हाउसेस तो एटा कौन ठीक अच्छी तापर ही कैन होल्ड ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट नॉट एक्सीडिंग मोर देन 6 मंथ एटा भी ठीक अच्छी तापर एटा कहछि 20 इलेक्टर एंड 20 प्रपोजर ये कुछ एट कौन कहछि इलेक्शन में consist of or say only elected sorry not only elected it both elected and nominated only elected no both elected and nominated ताले एटा भूल अछि सॉरी एटा भूल अछि तापर ए दिटा ठीक अछि ताहले कोटा इनकरेक्ट अछि only one is the right answer नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो समझते पढ़ो समझते नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो समझते नेक्स्ट क्वेश्चन the tenure of the vice president of India is what एटा वेरी बेसिक क्वेश्चन केते अरे ना राज्यसभा सीसना मेंबर बट भाइस प्रेसिडेंट कर टेन्योर होची 5 वर्ष नॉट 6 वर्ष दो he or she is the member of the he is not the member of the Rajya Sabha यार he is not the member of the Rajya Sabha से कौन as per article 64 सी कौन बाय डिफॉल्ट राज्यसभा को चेयर करंती बट ही इज नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा नॉर्मली राज्यसभा मेंबर मान टेन्योर थाए 6 वर्ष एंड एवरी 2 ईयर रे 1/3 ऑफ द मेंबर कौन तांकर से माने ये करंती रिटायर करंती किंतु वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर केते ना 5 वर्ष ठीक ओके व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट कोटा करेक्ट नुह कोटा करेक्ट नुह को समझते कोटा एटी कहछि कोटा नॉट करेक्ट पचारछि नॉट करेक्ट पचारछि कोन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल has to be passed by both houses of parliament separately with simple majority okay the constitutional cases in supreme court is heard by minimum 5 judges freedom of press is included in the fundamental right freedom of speech and expression देखो freedom of press टा कोथर अछि freedom of speech and expression अछि आर्टिकल केते एटा होछि आर्टिकल 19 तो एटा कोन एटा ठीक अछि सी इनकरेक्ट पचारछि त माने एटा आंसर होबनी जाकिर हुसैन वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट का ना कहथली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तो ये भी हेबेनी तो जेहेतु ये हेबेनी तो कौन हम आंसर दिस वन इज द आंसर कौन ना किए थिले ना डॉक्टर एटा वेरी बेसिक क्वेश्चन सर्वपल्ली राधाकृष्ण वाज द first vice president of India right okay so that's it for today guys so जो माने भी SSB TGT को भल से प्रिपेयर करो चाहू छ you can check out our ongoing SSB TGT batches okay so we will meet on what we will meet on upcoming Monday and हाँ तो मु तमनु कहितली कि लास्ट को तमनु को मु कहबी कि गोटे सीट को प्रिपेयर करछि जो थरे कि तम माने तमरो जो माने रिवीजन ने प्रॉब्लम होछि जो माने करा रिवीजन ने प्रॉब्लम होछि यू कैन टेक हेल्प ऑफ दिस माने एटा कि कोन मोटे एक्टिव रिकॉल सीट प्रिपेयर करछि जोटा कि मु मो टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ बिमोहित रो अपलोड करिवि एंड सब सब्जेक्ट रो मु एमति करी अपलोड करिवि एमति क्वेश्चन भलिया थिबो पिक्चराइज्ड फॉर्मेट रे थिबो तम माने कोन ताकू आंसर करिवो सो दैट तम मानको इजी हबो to recall the topic okay so let's wind up the session thank you so much everyone thank you so much for joining and I'm really sorry for the technical glitches
So let's meet on Monday on